But when data will come, whenever the data manipulation operation perform on those table, at that time data will come. ओके आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई सिस्टम बनाई, आज ही मार्केट में लॉन्च करोगे तो पूरी एप्लीकेशन का पूरा डेटाबेस आपका खाली है. जैसे जैसे लोग इसको यूज करेंगे डेटा जनरेट होगा और आपका डेटाबेस बढ़ता जाएगा. सो दैट इज योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. दैट इज DML. Okay. So what we will learn here, DML. The DML statement executed when? कब DML statement execute होगा? Add new row into the table. Whenever new data comes, we have seen just insert into S1, फिर value करके मैंने एक value डाली आशीष, enrollment number और CPI. So whenever new record is entered, second, modify the existing data. If I want to change something, our previous problem, वो आशीष का CPI अभी भी 15 ही है. ओके मुझे चेंज करना है, मैं कैसे करूंगा? अपडेट से. अपडेट चेंज करना पड़ेगा. अपडेट क्या? टेबल 1 S1 क्या चेंज करना है? सेट कौन सी कॉलम? CPI इज इक्वल टू 15 था, वो मुझे 8.7 करना है. किसका? व्हाट यू वांट टू अपडेट? यू वांट टू चेंज CPI 8.7, but to whom? It may be possible that in student we have a 300 student data, so I have to specify out of 300 student मुझे किसका डेटा चेंज करना है. So at that time I will provide enrollment number. Why? Because enrollment number is unique. So we will see. So if you want to change something, if you modify the existing data, you will execute DML operation. Third, remove existing rows from table. We have seen in last lecture also. If I want to remove some data, it is not important for me right now, or by any reason, so we will execute the DML statement. See the transaction. A transaction consists of collection of DML statements. We have seen our lecture. Theoretical definition of transaction and practical definition of transaction. Practical of that definition of transaction says that transaction is a collection of DML statements. Here, which are the DML statements? Insert, update, and delete. So every transaction is a combination of only 3 operations: insert, update, and delete, and form a logical unit of code. क्योंकि हमने देखा after execution of transaction will perform at least one business task. तो कोई ना कोई logical काम करेगा. Clear? Let us see. Adding a new row in a table. टेबल में नई रो डालनी है. Once it is executed, one record will be increased. What is the syntax? Insert into table name, and then optionally you can specify the column names. Optionally you can specify column name. अगर नहीं करना है, if we will not specify the column name, then we have to provide the value for every column. So insert into table name values. अब value करके आप value डालें. First value for first column, second value for second column, third value for third column. Okay, so only one row is inserted at a time with this syntax. इस तरीके से at a time हम एक row को insert कर पाएंगे. Let us we have seen. So before inserting data, पहले check कर लो तो table का syntax क्या है. Why? Because we should enter column name as well as we have to also check that what is the data type. So if I want to insert in a S1 table, so insert table name is S1. It may be employee, it may be department. Now values. In bracket, I have to enter first value for enrollment number, but it is varchar. So if it is varchar, I have to enter in a single quotation. So I can enter again 19 BPCP 5005. Suppose this is my enrollment number. Now second column is a name. Enter name. So let me enter my name. And third is a CPI. Now CPI is a number column. So number will be not included in a single quotation. Okay. So अभी try करते हैं. मानो कि मेरा CPI 16.0 या 16.3 and run. Will it allow me or not? ये allow करेगा.
Yes, it will Yes. assist. Yes, sir. Yes. It will Yes, allow. sir. Okay, row is inserted. Why? इसने क्यों allow किया? सर आपने CPI 20 कर दिया. 20. Yes, CPI 20 था इसलिए. ठीक. अब मानो कि सेकंड स्टूडेंट है, नंबर 6. नाम उसका संजय नहीं है, कुछ और रखते हैं, संजू. अब एनरोलमेंट नंबर दे रहा हूँ मैं 25.5. अब अलाउ करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं कर. See, check constraint violated. See, we have only one constraint check. अगर मैं किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर फिर से संजू डाल के मंजू करता हूँ तो वो ले लेगा. सपोज CPI is 5.5, तो ये ले लेगा. One row is inserted. See the data. From S1. Okay, 5, 6. Let me insert again duplicate record. Insert into S1 values 19 PECE 5006. सिंगल कोटेशन में चाहिए. नाम है उसका फिलिप और CPI है 7.8. Record inserted. See again, select start from S1. Here, see the Manju and Dilip both have enrollment number 66. Enrollment number तो unique होना चाहिए. We have not specified. Whenever I created the S1 table at that time, I have not created primary. That's why it is taking. और मेरा डेटाबेस के पास दिमाग नहीं है. हमने जिस हिसाब से टेबल बनाया होगा वो तो उस हिसाब से ही काम करेगा. अगर मैंने स्टूडेंट टेबल में एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया है तो वो तो कुछ भी वैल्यू लेगा. डुप्लीकेट वैल्यू भी ले लेगा, नल भी ले लेगा, जो नहीं लेना चाहिए. समझ में आ रहा है? So as a developer, we have to think that what type of constraint I want to create on which column. So this is the insert command. Insert into table name and then provide the values. Values लिखना जरूरी है. Values. Okay. So insert a record containing each column. But if I want to change the order, here what I have to do? I have to first enter enrollment number. बाद में नाम ही डालना पड़ेगा, बाद में CPI ही डालना पड़ेगा. क्यों? Because I am not specifying the column sequence. Suppose I want to change the sequence of column. Insert into S1. Values करके मुझे पहले enrollment number नहीं, पहले नाम डालना है. Suppose Alkesh, this is name. अभी उसका CPI 9.8. उसके बाद में उसका enrollment number 19 PECE 3005. So if I want to change the sequence at that time with table name के साथ आप column का sequence लिखो. So first is my name. तो पहले लिखो, पहला जो पहली वैल्यू है वो name है. सेकंड वैल्यू क्या है? CPI है. थर्ड वैल्यू क्या है आपकी? Enrollment number. समझ में आ रहा है? If you want to change the order of the data to enter in a table, so if I am changing the order, here name will be first, so it is always. Second will be CPI and third will be enrollment number. In previous query, we have not specified this. मैं डायरेक्ट ऐसा लिखा था insert into S1 और डायरेक्ट वैल्यूज लिखा था. So if I will not provide the column names with table, then I must have to enter data in this sequence. So पहली वैल्यू मेरी enrollment number की ही आनी चाहिए, then name, then CPI. It is advisable whenever you write a code at that time column का नाम लिखना जरूरी है. Clear? Run. ये क्या? Invalid school. और एनरोलमेंट नंबर में सिंगल कोट बंद करना.
यहाँ पे सिग्नल कोड नहीं किया, ओके चलो गुड। ओके, रो इज इंसर्टेड बट व्हेनेवर आई चेक द डेटा, डेटा तो यहाँ पर डिस्प्ले उसी सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, null case और 9.8 समझ में आ रहा है। सो यू कैन एंटर इन आउट ऑफ ऑर्डर, इफ आई वांट टू एंटर, इफ यू वांट टू एंटर आउट ऑफ ऑर्डर देन प्रोवाइड द कॉलम नेम। सो मेक अ हैबिट, कॉलम का नाम लिखना जरूरी है, कंपल्सरी नहीं। ओके, नाउ सपोज आई डू नॉट वांट टू एंटर ऑल वैल्यू, आई वांट टू एंटर ओनली टू वैल्यू, डिपार्टमेंट आईडी और नाम ही डालना है, थर्ड कॉलम उसकी है वो नहीं डालनी है, लाइक दैट। हियर आई वांट टू एंटर ओनली नेम एंड सीपीआई, name and CPI. I do not want to enter number. So at that time, I will specify 2 columns, not in 3 columns. Now, I'm not sure whether this express addition will allow me or not. Insert into S1, suppose only name and CPI. Do not want to enter enrollment number. Values. Name क्या है? रोहन, CPI है 6.7, then semicolon, run, one row is inserted, see the data, रोहन का एनरोलमेंट नंबर नहीं है, वो खाली है। So whenever we will not provide the specific value for a column, it will not take value, it will insert null value automatically. ये क्या है? null है। Okay, now it is your exercise what is null, आपको ढूंढना है null क्या है। okay. समझ में आ रहा है? So if we will not provide the value, it will take null। मैं डायरेक्ट ऐसे null भी लिख सकता हूँ, suppose here insert into S1 और वैल्यूज, फर्स्ट कॉलम क्या आएगी? एनरोलमेंट नंबर, जो मुझे नहीं डालना है, तो मैं क्या लिखूँ? नल। सेकंड कॉलम ना, रोहन की जगह सपोज जनक, और सीपीआई है उसके 6.9, इज ऑल्सो वैलिड, वन रो इज इंसर्टेड। सी जनक का भी एनरोलमेंट नंबर नहीं। आपको ये क्वेश्चन होगा कि जनक ऊपर कैसे चला गया? We will see order. Clear? So if you do not want to enter data, don't specify that column. Column नहीं लिखोगे तो वैल्यू नहीं जाएगी। So there are 2 ways to enter null data: omit the value for that particular column, or explicitly लिखो null, तो भी वो null लेगा। Now again I am asking you question, what is null? वो आपको ढूंढना है। Inserting special values. Now in every database there are some special variables are there. Special variables. So here there is a one variable sysdate. Sysdate means system date. So here let's say assume that we have an employee table. So first value is employee ID, it is 113. Second name is a first name, it is Louis. His last name is Pop. His email ID is lpop. Phone number is 515 dot. Hire date means joining date, it is a sys date. What is sys date? Sys date means current system date, आज की डेट, तो वो आज की डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। So sys date is a one type of variable in database. It will identify the current system date. आज की सिस्टम डेट क्या है वो ले लेगा और उसकी वैल्यू डाल देगा। If I do not want to enter the sys date, I have to explicitly enter the date 7th August 2020. Null is also one variable. So once I will specify null, it will take null value. Okay, वो blank value डालेगा। So hire date क्या होगी? 12th March 01। अगर आज की डेट होगी तो क्या आंसर आएगा? 07 AUG 07-AUG-20।
Now creating the script. This is again important. Now let us assume that what is meaning of script. Here, I have created one student table and I have to enter his name, enrollment number and CPI. So for every student, I have to write the statement insert into table name, values करके डालना पड़ेगा. So one record for first student, second record for third student. If I have to enter data for 70 students, 70 students, so I have to write that statement 70 times. This SQL is browser based, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलती है कि वहां जाके आप यहाँ पे रन भी कर सकते हो अगर फिर से लिखना ना पड़े तो वहां क्लिक करके रन करोगे तो आउटपुट मिल जाता है. बट इन एक्चुअल डेटाबेस ब्राउजर बेस्ड सपोर्ट इज नॉट देयर. ब्राउजर बेस्ड नहीं होता है, आपका कमांड लाइन होता है. कमांड लाइन तो होगा इन Oracle रन एसक्यूएल कमांड लाइन. तो आपको ऐसी स्क्रीन मिलती है कमांड विंडो. नाउ यू कैन रन हियर. ज्वाइन करना पड़ेगा. Connect HR. Select star from S1. है आपका S1. देखो ये दोनों का आउटपुट एक ही है. एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड CPI. क्लियर. ये ब्राउजर बेस है इसलिए आपको ग्राफिकली अच्छा लगता है. और दिस इज अ SQL कमांड विंडो. Now here from here if you want to enter the command, अब यहाँ पे हिस्ट्री जैसा नहीं है कि आप चेक करके फिर से कमांड को रन कर सकते. Even if you run the second statement again, then also you have to change value. Suppose I go to here history and instead of if I will select here, just I do not have to write the command, but I have to provide the new value for new student. वो तो मुझे डालना पड़ेगा ना. 8.9 and run. So insert होगा. So if I have to run or if I have to insert command again and again for 70 times or 200 times, so what I will do, I will not provide the direct value. मैं direct value नहीं दूंगा. I will use variable. Zero what is variable. Once we declare the variable, at run time it will ask the value. तो run time पे आपके पास value मांगेगा. आप जो value डालोगे वो ले लेगा. So that is known as a script. What I will do, insert into S1 values करके मैं direct value नहीं दूंगा, मैं variable का नाम लिखूंगा. क्या? So my first variable is a enrollment number. So ampersand E number, but it is a varchar, so I have to enter in a single quotation. Again ampersand name के लिए मैंने लिया वेरिएबल n, या फिर ऐसा मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम. इसमें वेरिएबल. थर्ड इज ampersand CPI. CPI is a numeric data, so no need to enter single quotation. So insert into S1 values variable name, variable name, variable name. Now run it. Not all variables mount. Insert into S1 values. Enrollment number, name and CPI. तीन तो वैल्यू है इसमें, कहाँ जाता है? Describe S1. Number, name and CPI. Insert into S1 values enrollment number, name, CPI. सही तो मैं क्या कर रहा हूँ? Object to be described could not be found.
all variables bound. सेम वैल्यू यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, नॉट ऑल वेरिएबल बाउंड. सेम स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू S1 वैल्यूज करके मैंने यहाँ डाला तो हो रहा है. अगेन whenever you execute problem in a browser or in an actual software, such type of problem you can occur. Again, here we have installed Oracle Express Edition, means it is only for practice purpose. We have discussed already. You cannot create enterprise application in Express Edition. SBI जैसी बड़ी बैंक का डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन में नहीं बनता है, उसके लिए आपको एक्चुअल सर्वर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है. So here we have not installed the actual server. So it will ask enter enrollment number. So I will enter 12 BECE 5009. Name कुछ भी CPI 7.9. One row created. If I want to enter for second student, no need to write the command again. Just enter slash. Slash करो और enter करो. So no need to write the second statement. आपको पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं है. सेकंड वैल्यू डालो, दूसरे स्टूडेंट का नंबर 12 BECE 5009, नाम, उसका CPI 6, one row is created. So enter 100 times slash enter value slash 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 slash. No need to write the command. Now see the data. In case this कौन सा नया है, आशीष पटेल वाला और ASP वाला. So instead of writing the actual value, if we will provide variable, then it is known as a script. उसको script create करना बोलते हैं. Okay. Clear? एक और भी है आपके लिए यहाँ पे. Yes. Once you write the command, if you want to save this script, so write the command and here save button is there. Save button है यहाँ पे. अब तक तो हम रन कर देते, but once you save, तो वो पूछेगा कि स्क्रिप्ट का नाम दो, और मैंने नाम दिया insert into S1 .SQL. वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. सेव. ओके, तो आपकी एक स्क्रिप्ट सेव हो गई. वंस यू रन इट, नाउ इफ यू वांट टू सेव स्क्रिप्ट हियर, वहां पे तो बटन नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सेव. पूरा पाथ देना पड़ेगा. डी ड्राइव कॉलम S1 अंडरस्कोर insert .SQL. एक फाइल बन जाएगी मेरे डी ड्राइव में. सी हियर, दिस इज माय डी ड्राइव. S1 insert.SQL. दिस फाइल इज क्रिएटेड. देखो इसमें क्या है, ओपन इट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1. लास्ट में हमने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम S1. तो लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट वॉट एवर यू रन, इट विल बी स्टोर्ड इन अ स्क्रिप्ट, और पीछे स्लैश आ जाएगा, उसको बंद करो. इफ यू वांट टू रन इट, तो एग्जीक्यूट द कमांड रन और पूरा पाथ डी ड्राइव डी कॉलन स्लैश S1 अंडरस्कोर इंसर्ट .SQL. कमांड रन हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ रन यू कैन ऑल्सो एंटर एट द रेट और फाइल का पूरा नाम, पाथ डी कॉलन S1 अंडरस्कोर इंसर्ट .SQL. सीधा आउटपुट. So this is a script. You can also run the script. Okay, but script से क्या होगा, जो लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होगा वही स्टोर होगा. Copying rows from another table. You want to copy data from another table. दूसरे टेबल में से नए टेबल में डालना है, सब टेबल में. So what we will do, insert into table name
कौन कौन सी कॉलम चाहिए वो स्पेसिफाई करो, आईडी, नेम, सैलरी एंड कमीशन, ये 4 कॉलम चाहिए। अब डेटा कहाँ से लेना है, सिलेक्ट column 1, column 2, column 3, column 4 from employees. We have an employee table in which information of all employee is stored. If I want to create a sales representative table, I want to create a separate table for sales representative. मुझे सिर्फ सेल्समैन का डेटा चाहिए, तो कौन सा डेटा चाहिए वो स्पेसिफाई करो। नाउ दिस इज माय आउटर क्वेरी, दिस इज माय इनर क्वेरी, query within query. So this query will run first. So what this query will do, it will extract 4 values: employee ID, last name, salary and commission of all employees where job is like representative. This is new for you. We have not discussed what is where condition, but हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि सभी एम्प्लॉय में से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उसका डेटा निकालो। तो ऐसे 4 लोग, 4 rows are created. So these 4 rows are extracted from the employee table and it will be inserted into sales representative table. तो यहाँ पे मैंने insert into करके वैल्यू नहीं डाला, 4 बार मैंने वैल्यू कमांड रन नहीं किया जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं वैल्यूज करके डाला। बट हियर विद इन अ सिंगल कमांड यू कैन एक्सट्रैक्ट 4 record. अगर 4 की जगह 400 भी होती तो भी वो आ जाते। So we can also write them, if I want to create a table or if I want to create a sub table, मेरा टेबल ऑलरेडी है, दूसरा टेबल मैं अभी बना रहा हूँ, उसमें रिकॉर्ड डालना है, बट वो रिकॉर्ड मेरे पुराने डेटा में से मुझे कॉपी करना है जस्ट, तो हर बार वो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम अनदर टेबल। सो बाय यूजिंग सच क्वेरी, ऐसी क्वेरी लिख के डेटा निकाल दूंगा और वो डेटा मैं इसमें डाल दूंगा। सो विद इन सिंगल क्वेरी मेरे 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? You will find the exercise also for such type of problem. Changing data, that was about insert. Now if you want to update, data को change करना, so update फिर table का नाम, set क्या change करना है, कौन सी column, provide the new value and you have to specify where condition, क्या change करना है। Let's see one example. Update employees, set department ID is equal to 70 where employee ID is equal to 113. मतलब एम्प्लॉय नंबर 113 का डिपार्टमेंट नंबर मुझे 70 करना है, जो पहले कुछ और था। और लेट्स से हियर, हाँ मैंने यहाँ से जनक के सीपीआई मैंने गलत डाले 6.9, मुझे चेंज करना है। सो व्हाट आई विल डू, अपडेट सीपीआई, अपडेट टेबल S1, सेट CPI is equal to new value 6.9 की जगह सपोज मैं दे रहा हूँ 9.8, इसका where जनक का where name is equal to जनक, 1 row updated, see the data, now it is 9.8. clear? सर तो मॉडिफाई और अपडेट में क्या डिफरेंस है? मॉडिफाई में टेबल मॉडिफाई होता है और अपडेट में डेटा मॉडिफाई होता है। ओके सर। यहाँ पे नाम में आपने वेयर क्या डिफाइन किया है और उसकी साइज 20 है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ गया जिसका नाम 20 कैरेक्टर से ज्यादा है, तो साउथ इंडियन है सपोज, और उसका नाम ही इतना बड़ा है कि 20 कैरेक्टर में नहीं आ रहा है, तो आपको टेबल में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल S1, उसमें मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल, मैं टेबल चेंज कर रहा हूँ S1, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है, नेम, डेटा टाइप एज इट इज रखेंगे और साइज 20 की जगह मैं क्या करूंगा 30। टेबल अल्टर हो रहा है, इसमें उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। दिस इज DDL, दिस इज DDL, बट अपडेट इज अ DML। यही डिफरेंस समझना है। काफी स्टूडेंट पूरा इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उनको यही नहीं पता है कि अल्टर में और अपडेट में डिफरेंस क्या है। ये पूरा का पूरा टेबल चेंज हो रहा है।
समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि आप जनक का डेटा चेंज करने के लिए अपडेट S1 set CPI is equal to 10.00 और वेयर कंडीशन डालना भूल गए, बताना तो पड़ेगा किसका सीपीआई चेंज करना है। अब जनक का मैंने एनरोलमेंट नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर तो है ही नहीं और मेरा यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, अदरवाइज जनरली प्राइमरी की में एनरोलमेंट नंबर ही डालते हैं कि किसका एनरोलमेंट नंबर चेंज करना है, किसका सीपीआई चेंज करना है। सपोज आई फॉरगॉट टू एंटर वेयर कंडीशन एंड एंटर, 10 rows are updated. Now see the data. सबके CPI 10. Mass promotion with 10 CPI. आपको यही लग रहा था ना कि सेकंड सेमेस्टर में मास प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा। So whenever we are doing with data, whenever we are performing operation specifically update, उस टाइम पे ये बताना जरूरी है कि क्या अपडेट करना है, किसके लिए करना है। इफ वी फॉरगॉट टू एंटर द कंडीशन, डेटाबेस के पास दिमाग नहीं है, मैंने पहले बोला, अगर आप गलत करोगे तो वो तो गलत ही करेगा, तो सबका सीपीआई 10 होगा। अब क्या करेंगे? लेकिन अच्छी बात ये है, ये डीडीएल नहीं है, डीएमएल। डीएमएल में अगर आपने गलती से कोई चेंज कर दिया तो वो रोल बैक हो सकता है। रोल बैक सीखा आपने लेक्चर में, एटॉमिसिटी। If transaction is successfully not completed, then we can roll back it. उसको रोल बैक कर सकते हैं। कैसे? रोल बैक एंड देन एंटर, रोल बैक कंप्लीटेड। लेकिन क्या होगा, यहाँ आके आपने जितने डीएमएल ऑपरेशन किए हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो जरा 9.8 8.9 आ गए, 10 वाले थे वो 9 में आ गए, तो ये रोल बैक कर सकते हैं। ठीक, सो अपडेट में मेन क्या है, वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन गलत डाली, इफ योर वेयर कंडीशन इज नॉट गिवन, इफ यू फॉरगॉट टू एंटर वेयर कंडीशन, और इफ योर वेयर कंडीशन इज रॉन्ग, देन आल्सो इट विल मॉडिफाई ऑल डेटा, सभी डेटा को वो चेंज कर दिया। वी कैन चेंज मल्टीपल कॉलम, जैसे नाम भी चेंज कर सकते हैं, सैलरी भी चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट S1 set CPI is equal to 10.00, comma सेकेंड कॉलम, कॉमा दूसरा क्या चेंज करना है, एम्प्लॉय नंबर। एनरोलमेंट नंबर भी नहीं डाला हमने जनक का। एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन 12 BECE 3008, where name is equal to जनक। दोनों चेंज हुआ। Select star from S1। जनक का एनरोलमेंट नंबर भी आ गया, सीपीआई भी आ गया। सो वी कैन आल्सो चेंज मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। Now here what happened with set and column name, I am providing direct value, CPI ये डालो और एनरोलमेंट नंबर ये डालो। But sometimes if I do not know the exact value what I want to modify, मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, I want to take reference, तो मुझे क्या करना है? So instead of direct value, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू एक वैल्यू दे दी और सीपीआई इज इक्वल टू वैल्यू दे दी, बट इंस्टेड ऑफ वैल्यू वी कैन आल्सो राइट अ सेपरेट क्वेरी।
ये एक अलग क्वेरी है। क्या कह रही है? डायरेक्ट वैल्यू नहीं, सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 205. So what this query will do? It will find out the job ID of person whose ID is 205. वो 205 में जाएगा और चेक करेगा कि उसका जॉब आईडी क्या है, वो यहाँ पे असाइन होगा. Again, it will again search for the employee table. It will find out employee number 205. It will find out what is the salary of 205, and that value will come here. और वो किसको अप्लाई करेगा? 114. एक्चुअली प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है इस कंपनी की क्वेरी का? आपको करना क्या है, आप पहले एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, सपोज मेरा नंबर 114 है, मेरा एम्प्लॉय नंबर 114 है, मैं अभी लेक्चरर या फिर जूनियर प्रोग्रामर हूँ, ओके. तो मेरा प्रमोशन हुआ, ओके, मेरा प्रमोशन हुआ, तो क्या होगा? मेरी डेजिग्नेशन चेंज हुई, जूनियर प्रोग्रामर से मैं सीनियर प्रोग्रामर बना, तो मेरी सैलरी भी सीनियर प्रोग्रामर जैसी हो जाएगी. तो यहाँ पे 205, द एम्प्लॉई हु इज 205 इज अ सीनियर प्रोग्रामर. तो मैं क्या करूँगा, 205 की जो डेजिग्नेशन है वो भी मुझे मिल जाएगी और उसके जितना सैलरी मेरा हो गया. अगर मुझे डायरेक्टली पता है कि 205 का जॉब डेजिग्नेशन क्या है और उसकी सैलरी क्या है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देता. सेट जॉब आईडी इज इक्वल टू सीनियर प्रोग्रामर कॉमा सैलरी इज इक्वल टू 20,000. लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, मेरा एम्प्लॉय टेबल बहुत बड़ा है, टीसीएस का एम्प्लॉय टेबल है, टीसीएस के 5 लाख एम्प्लॉय है, तो 5 लाख एम्प्लॉय में से आपको किसको फाइंड करोगे? तो वो सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हाँ 205 है, वो सीनियर प्रोग्रामर है. सो इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट क्वेरी यू कैन राइट सब क्वेरी. सो तो मेरा जॉब आईडी किसके जैसा होगा? 205 जैसा. मेरी सैलरी भी किसके जैसी होगी? 205 जैसी. So here this is a sub query to extract data from table. So first of all this internal query will run, it will find out the value and that value is assigned to this. किसके लिए? एम्प्लॉय नंबर 114. अगर आपने ये वेयर कंडीशन नहीं डाली तो क्या होगा? टीसीएस के सभी एम्प्लॉय 4 लाख एम्प्लॉय सभी सीनियर प्रोग्रामर बन जाएंगे और सभी की सैलरी 20,000 हो जाएगी. ये ऑपरेशन किसके लिए करना है? एम्प्लॉय आईडी 114 के लिए, तो सिर्फ उसके लिए ही होगा. समझ में आ रहा है? तो आप रेफरेंस लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है. ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं. सी वी हैव एम्प्लॉइज टेबल. अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 101 है, वो डिपार्टमेंट नंबर 90 में काम करता है. आपको उसका डिपार्टमेंट नंबर 200 करना है. तो क्या होगी? अपडेट एम्प्लॉइज सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 200. वेयर इसके लिए करना है 101. सो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101 और रन इट. क्या एरर है? यूनिक कंस्ट्रेंट एचआर एम्प्लॉय आईडी डिपार्ट डेट पीके वाले जॉब हिस्ट्री वाले जॉब हिस्ट्री वाले डिपार्ट आईडी 100 वेयर 101. मतलब एम्प्लॉय नंबर 101 को हम डिपार्टमेंट नंबर 200 में डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट पहले चेक करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट टेबल में ऐसा कोई टेबल है. सिलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी क्या है? 200. और लास्ट क्या है? 270. 300 करते हैं.
एम्प्लॉय नंबर 101 को 300 में डालो तो भी नहीं हो रहा, बिकॉज माय पेरेंट टेबल डज नॉट हैव एनी डिपार्टमेंट whose डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 300। ये किसके कारण हुआ? प्राइमरी की और फॉरेन की के कारण। लेक्चर है किसी का? नेक्स्ट। नो सर। किसी का लेक्चर नहीं? लास्ट लेक्चर है। हेलो हाँ सर, हेलो। लास्ट तो हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है? सो व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनी डीएमएल ऑपरेशन, तो आपके सभी कंस्ट्रेंट चेक होंगे। अगर एचआर टेबल में, अगर डिपार्टमेंट टेबल में 200 नाम का डिपार्टमेंट नहीं है और आप एम्प्लॉय टेबल में किसी को 200 डिपार्टमेंट में डालने जा रहे हैं तो वो एरर देगा, करंट डेटा है ही नहीं आपका। नॉट ओनली फॉर अपडेट, इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों में ऐसा होगा। इंसर्ट करने जाओगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में डेटा डाला मैंने, कोई नया एम्प्लॉय आज ही रिक्रूट हुआ तो उसका एम्प्लॉय आईडी डाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट, जॉब, सैलरी, सब कुछ डाला और डिपार्टमेंट आईडी मैंने डाला 300, तो वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल को वो चेक करेगा। हियर दिस डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इज अ फॉरेन की, दिस इज अ फॉरेन की व्हिच इज रेफरेंसिंग टू द डिपार्टमेंट टेबल। वो डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस करती है, दिस टेबल, ये डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस करती है और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है वो प्राइमरी की है। वी हैव डिस्कस आल्सो इन लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि पेरेंट टेबल में डेटा नहीं है तो चाइल्ड टेबल में वो इंसर्ट नहीं होगा। नाउ रिमूव, अगर आपको कोई रो नहीं चाहिए तो सिंटैक्स इज वेरी इजी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड देन प्रोवाइड द कंडीशन कि आपको क्या डिलीट करना है, वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फाइनेंस, वो निकल जाएगा। जैसे हमारा S1 टेबल था, I want to delete Janak, delete from S1 where name is equal to Janak, one row deleted, निकल गया, see the data। जनक नहीं, लेकिन फिर से तो वेयर कंडीशन डालना भूल गए तो delete from S1, 9 row deleted, select star from S1, टेबल खाली, नो रो सेलेक्टेड, क्लियर? तो अपडेट, सॉरी, डिलीट्स, by using delete we can delete the rows from table, बट क्या डिलीट करना है वो स्पेसिफिकली डिसाइड करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे रोल बैक करके वापस लाता हूँ तो यहाँ पे सीधा डेटा है, आपका टेबल वापस आ गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S1। अब मुझे डिलीट को रिमूव करना है, डिलीट फ्रॉम S1 where enrollment number is equal to, मैं डिलीट करूँगा 19 BECE 5006। क्या मैसेज आया? 2 रो डिलीटेड, एक नहीं 2 रो निकल गई, मतलब डिलीट के साथ मंजू भी निकल गया। क्यों? क्योंकि दोनों का एनरोलमेंट नंबर सेम है। जनरली एनरोलमेंट नंबर सेम नहीं होता है, लेकिन हमारे इस टेबल में है। कई बार ये भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको वेयर कंडीशन में ऐसी कंडीशन डालो ताकि एग्जैक्टली आपको जो रिमूव करना है वही निकले, कोई और ना निकल जाए। क्लियर? सो वेयर कंडीशन अपडेट और डिलीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगेन डिलीट करने जाएंगे तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चेक होगी। डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 60 है, मैं 60 नंबर के डिपार्टमेंट को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम departments where department ID is equal to 60. Now run it. Integrity constraint violated child record found. We cannot remove department number 60 from department table. Why? Because we have few employees in an employee table who are working in department number 60. मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी। Whenever we define the foreign key, we have to specify that on delete set null या फिर on delete set cascade, ये हमें बताना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं बताया तो वो आपको पेरेंट रिकॉर्ड को रिमूव नहीं करने देगा जब तक चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, चाइल्ड रिकॉर्ड है। इन एम्प्लॉय टेबल वी हैव फ्यू एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 60, तो पहले उनका कुछ काम करो। So we have to first remove all employees who are working in department number 60, पहले वो निकाल दो, बाद में आप डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट 60 रिमूव करो तो होगा, otherwise it will not help. So this is happening because of constraint, ये constraint डाला हुआ है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर constraint नहीं होता तो ये निकाल देता। तो डिपार्टमेंट नंबर 60 है ही नहीं और 20 लोग तो डिपार्टमेंट नंबर 60 में काम कर रहे हैं। तो this is known as a consistency. प्रैक्टिकली इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। समझ में आया? एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज दिस इज डेटाबेस। ये डेटाबेस ने खुद अपने आप रूल बना के रखे हैं जब हमने टेबल बनाया था।